Good morning, everyone. Any questions to ask? Anybody? Good morning, ma'am. Good morning. Does anybody have any questions? मैम टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग एक बार रिपीट कर देते हैं. Who's asking? I am मैम. Who is this I am? शुभम. Shivam, were you absent in the last class? No ma'am, I missed that point. You missed that point. Can anybody recap? What is expository? What is expository writing style? Anybody in the class? People who will be answering questions will be getting 1 point for CP, which is class participation. If you are interactive in the class, if you are answering questions, you will be graded and your marks will be added. So what is expository writing style? It is a style in which we explain or expose a topic. Yeah. So what is that which you did not understand? It's type. Types नहीं समझे हो. चलो ठीक है. I think Parvinder will tell you what are the types of expository style. Okay, ma'am. Ma'am, there are few types of expository writing: business writing, expository essay, how to or instructional articles. How to क्या News मतलब नहीं writing. समझे. How to क्या बोल रहे हो नहीं समझे. How to I क्या? mean, ma'am, how to and hyphen instructional article. How to का मतलब क्या हुआ? How, ma'am, last class में मैम लिखा हुआ था उसमें how to / instructional articles. How to start the computer? How to use the washing machine? Instructional articles, news writing, recipes, तो कहते scientific हैं ना how to reports. manual कैसे किया जाता है, कौन Okay, चीज ma'am. कैसे की जाती है, कैसे लेमन की बनाई जाती है, प्रोसेस में बता. Okay, ma'am. मैंने बता Technical writing and textbooks. हाँ टेक्निकल राइटिंग एंड टेक्स्ट वो सब इज अ पार्ट ऑफ expository writing style. Shall I'll recap expository and move on to narrative style of writing. Expository writing style is to inform something, explain to something in a systematically way. हाँ, expository writing always informs and explains. Just inform, explain to something in a systematically way. In a systematic way, in a process. In a process, yes, ma'am. Yeah. Plus, also when it only informs. For example, the newspaper. The newspaper is also Shubham. Newspaper is also a type of expository writing style, wherein what is going on in somebody's house? Please keep your microphone muted. This you can do, no? Why should we know what is happening in your house? So, social media is also expository. हाँ, ये बताने दो एक बार. सबसे पहली बात तो है कि जब आप स्टाइल पूछेंगे, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल का टाइप पूछेंगे, सबसे पहले आना चाहिए दिमाग में न्यूज़पेपर. What does it do? It informs you. It explains. सेकेंड आपको आनी चाहिए हाउ टू मैनुअल. कैसे क्या चीज करना चाहिए. Supposing you have bought an iPhone and you're giving to somebody who does not know how to use it. तो कैसे तुम समझाओगे उसको. तुम स्टेप बाय स्टेप बताओगे. What are the uses, what are the features, what you can do. जैसे आपने खुद लिखा था
What are the protocols of COVID appropriate behavior? देखा था ना आपने 5 points of being safe in Ma'am, problem and solution. problems and solutions. So Yes, this is the ma'am. problems and this is solution. Yes, ma'am. Cause Problem effect. is COVID-19 and Cause solution effect. is Cause wearing effect mask and also. वगैरह. ये cause effect क्या है? ये हुआ इसलिए ये हुआ. वो बिना मास्क के घूम रहा था. He went out without the mask. He did not follow the instructions. So he, what happened? So he got this COVID. And then Yes. ये हुआ इसलिए cause and effect कहते हैं उसको. Yes. Cause ये cause हुआ और ये उसके बदले से उसके वजह से ये हुआ. So the Yeah. moment when somebody asks you to write to explain what is expository style, first thing should come in your mind, which is the first thing which should be in your mind is the newspaper, because the newspaper informs, explains. Then think of any recipe which you want to learn, or you read, or you want to explain how to do this. How to be a successful person. 20 points of being successful. What are the benefits of getting up early in the morning? So these things you know because of your experience. आपको ये बात पता है. अब you are not being convincing कि आप करो ही करो. मैं सुबह उठता हूँ तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं. You are not convincing anybody. But you are writing some 20-point program to be successful, or you're writing down some points to which from your experience which you think you should share this. अब इतने लोग जो फेसबुक पे जो लिखते हैं 95% तो informative ही रहता है ना. They inform you something that I went out and it was a day out with my relatives and we had a lot of fun and we went to this place and that place. वो क्या है? That is all. That is simply informative style, which is the expository style. They are doing nothing, but they are not convincing you that I am there, so you should always be. You should also be there. So आपको कोई convince नहीं कर रहा, but they are just putting up their status, informing you, and like they're explaining. I went there, and this happened, and that happened. Yes, ma'am. फिर लिटरेचर पढ़ी, किसी भी मैनुअल, किसी भी प्रोडक्ट का लिटरेचर आता है, मैनुअल आता है. That is a part of expository. मैंने बताया भी था कि पहले earlier days सेल्स इतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि अब हो गई है किसी भी प्रोडक्ट का. They used to buy it for one reason. They used to buy it और उसके बाद वो कैसे यूज होता है कैसे नहीं, वो पड़ा हुआ है. The manual was not there. I remember some stories which my mother told me about. There was a very sophisticated tape recorder which my father had brought from America way back in I think 1960s or 70s. बहुत दिन पहले. So it was a very beautiful tape recorder. I remember the tape was like very thin wire. जैसे बाल होते हैं ना, very thin wire, उस तरह का tape था. But they switched it on somehow. My mother and her sister, वो लोग switch on कर दिए थे, and they did not know how to switch it back, and everything was being recorded. So whatever they were saying, कि अब क्या होगा, अब तो बंद ही नहीं हो रहा है, whatever they were speaking, वो सब record हो रहा था, because they did not know how to switch it off, because in those days कोई लिटरेचर नहीं आता था कि कैसे टेक्निकल नो हो, कैसे इसको बंद करना है, how to start, how to which button to switch, to touch to stop it. So that was a junk waste, my mother used to say. उसके बाद उन्होंने कभी उसको छुआ नहीं. She never touched it. And the only person who knew it was my father, because he had got it from America. तो उनको पता था कि कैसे क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे बंद करना है. He knew it. But उसके साथ कोई मैनुअल अटैच नहीं था कि कोई भी पढ़ के समझ ले कि कैसे कैसे क्या करना. And I still remember, I remember like the tape recorder was just a heap in a corner
जो कि nobody used it, and later on it was given away to somebody else who knew how to do it. So क्या in olden times, earlier, the products came without the manual. कोई instructional, कोई manual नहीं था कि पढ़ के. I still remember my mother and her sister panicking कि अब क्या होगा, they're going to be, बहुत डांट पड़ेगी या जैसे वो सारी कुछ रिकॉर्डेड उनकी हो रही. They could not switch it back. तो ये जो अब मैनुअल जाना शुरू हुआ है, so this was research, no, why products are not picking up. अब फिर क्या शुरू हुआ कि टेक्निकल नो हाउ, they outsourced people, the technical writers, जो कि instructions लिखते हैं, literature उसके आती है साथ में, what is it, what all the features are there, all the instructions are there, some problems तो ये करिए, some problem तो वो करिए. I have a very sophisticated washing machine. Sometimes when something goes wrong, निकाल के manual पढ़ते हैं, okay, press this, press that. Sometimes it gets locked and you cannot open it. हम लोग क्या करते हैं? We keep it handy. Manual निकालते पढ़ते हैं. Okay. When this happens, check this, press that. So things have become much easier now because it comes with a manual. This manual is also under the expository writing style. It comes, each product comes with a manual now. And this is called technical writing. Did you understand, Shubham? और फिर ये होते हैं imaginary essays, जिसमें अच्छा ये जो टेक्निकल राइटिंग जो होती है, जो लिटरेचर के बारे में बात हो रही है, मतलब कि जो किसी भी प्रोडक्ट का लिटरेचर, उसमें कोई बंदा अपने मन से अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है. आई करके नहीं होता है, दो पर्सनल कुछ नहीं होता है. Whatever is there, it is there. Yes, ma'am. You cannot add your opinion. But this thing changes when you're writing descriptive, when you're writing expository essays, imaginary essays, like what Yes, if ma'am. everything, what if I do not get a job? What if this happens? What if we get lost somewhere? What happens? What will happen if I become invisible? So what if? What if I find myself alone and nowhere to go to? So all these are essays which also come under expository, because you are telling somebody what will happen if this happened. If this is your account. ये गौरव रंजन, तुम क्लास करोगे, तुम क्या कर रहे हो? What are you trying to do? If I ask you a question, you will not be, if you will not answer. Good morning. What good morning? तुम कहीं बात करो, बात कर लो, बाद में आ जाना, ठीक है? कल आ जाना क्लास में. When you are in the class, I want you to pay attention so that you may answer the questions if I ask you ever. So Shivam, did you understand the expository style? ये और भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो. No, ma'am, I understood. Okay, fine. Okay, then let us take a look at so now the narrative style. Narration, you already know what is narration in grammar. Can anybody tell me what is narration? Narrative comes from narration. Tell me what is narration? In grammar, what is narration? Anybody? Narrate a story, tell a story. So what is narration? What have you understood them? I'm not asking you the grammar rules. I'm just asking you what do you understand by the term narration.
जब नरेशन समझेंगे तब तो नरेटिव समझेंगे ना. Ma'am, direct, indirect speech. Ma'am, it is a commentary to convey a story to an audience. Yes, Ma'am, narration is an art or an action, Yes, ma'am. a creative way of narrating a story. It is conveyed by a narrative. Of course, naturally, a narrator. Narrator is a person who Specific tells a person. story. Yeah. Unspecified literary voice. Yeah. And of course, it has active voice and passive voice, Anything. direct, indirect speech. So narration is all about a process of telling a story. Yes, ma'am. All right. So narrative styling, narrative writing style. The second is we are taking up narrative style, which means narrative style talks about telling a story. So when you are using narrative style, you are all up to tell a story. So what is the narrative style, writing style checklist? It should have a beginning, it should have the body or the middle, or it should have the ending. Three things are very important. कोई भी किसी भी कहानी के लिए सबसे जरूरी है how you start it, the beginning part, the middle part and the ending part. Now, what should the beginning hold? Beginning क्या होना चाहिए? So when you are writing a narrative style of writing, you are telling a story. So the first part, the beginning, you will tell yourself, I have included a hook to grab the reader's attention. It means you have tried to choose such a topic to attract the attention of the reader. किसी कहानी का शीर्षक देख करके ही आपको पढ़ते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं. अच्छा, आप बताइए कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने शीर्षक देख करके रिजेक्ट किया है या उसका टॉपिक देख के आपने पढ़ा है? किसी कहानी को शीर्षक देखते हैं आप, द नेम ऑफ द स्टोरी देखा और उसको पढ़ लिया. Are there any stories which have attracted your attention? Let me get back to you. मैम कुछ स्टोरी का मैम शीर्षक देख के पता चल जाता है कि मैम स्टोरी में क्या किस चीज के बारे में बताया गया है. कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो और इंटरेस्टिंग लगता है. कौन सी स्टोरी, मेरा क्वेश्चन था, कौन सी ऐसी स्टोरी आपने देखा, शीर्षक देखा जो कि आप बिल्कुल लगे कि नहीं, आपको लगा कि नहीं मुझे पढ़ ही लेना है, ये अच्छा ही होगा, ये अच्छा होगा. और कितने स्टोरीज ऐसे होते हैं व्हेन यू द मोमेंट यू लुक एट द हेडिंग यू विल से नहीं, इसको नहीं पढ़ना मुझे. तो द नेम बुक्स में बहुत सारा था. हाँ, फॉर एग्जांपल any story which attracts your attention you will read it, और जो अट्रैक्ट नहीं करता है आपको, जो आपको अपील नहीं करता है, something which does not appeal you, उसको आप नहीं करते हैं. तो सबसे पहले तो when you are writing this style of narrative style, choosing the narrative style for anything, first you have to choose a topic that attracts the attention of the reader, number one. Number two, you have to describe the setting also. What is this all about? Describe the setting so that the reader can know ये कहानी, ये कहाँ, ये इवेंट, ये कहानी कहाँ की है, किसने बनाया है, किस लिए बनाया गया है, इसका एनवायरनमेंट क्या है. So you describe the setting of the story. For example, if you're talking about, there was one small girl who was alone in the house. Home Alone, अगर उसको हम Home Alone तो एक फिल्म भी है. अगर लाइक इन हिंदी मैम सोने के अंडा देने वाली मूवी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. वो तो हिंदी लाइक है.
हाँ, अगर वो आप टॉपिक चूज करते हैं तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? आप ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे जो कि विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, जो सबको फायदा देने वाली होती है कि नहीं? तो फिर आप नहीं जान रहे कि आपका ये स्टोरी का शीर्षक है, so naturally the people would want to read it कि पता नहीं क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, और ये सबके लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले यू हैव टू चूज अ टॉपिक व्हिच हैज टू बी अट्रैक्टिव। सेकेंडली, सेटिंग बताइए। तो भाई आप जैसे आप बता रहे हैं सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, तो उसका सेटिंग क्या होगा? अगर आपने इसको लिखना है, इस कहानी को, तो सेटिंग क्या रहेगा आपका, बताइए आप। तो सेटिंग में आप क्या लिखेंगे? किसी जगह के बारे में लिखेंगे ना, इस जगह के बारे में लिखेंगे। हेलो, किसने बताया था ये शीर्षक? मुझे उसी से पूछना है, बिकॉज शीर्षक उसका है तो वही बताएगा ना। हेलो मनीष, तुम बता रहे हो। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, तो ये शीर्षक जो तुमने बताया, तो ये कहाँ के बारे में बता रहे हो? किस जगह की बात है? यहाँ ऐसा कोई था मैम किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके पास मैम एक हाँ ठीक है, मुर्गी आप रहती थी, जैसे मैम ये ओके ओके, ये सेटिंग हो गया। लाइक दैट मैम। ओके, तो ये क्या बताया? किसी गांव में एक किसान रहता था, तो ये दिमाग में आ जाता है, सेटिंग हो जाता है। अच्छा, ये गांव की बात है, कोई शहर की बात नहीं है, पटने की बात नहीं है, दिल्ली मुंबई की बात नहीं है। ओके, गांव का सीन आ जाता है, एक गांव, एक किसान। ठीक है मैम, एक जगह मैम ऐसा है मैम, शहर में जो हम जहाँ पे मुर्गी मैम ग्रीन अंडे देती है। तो ठीक ये है, भी हो सकता है कोई तो टॉपिक हरे अंडे का इंटरेस्टिंग हो रहस्य। सकता है। तो हरे अंडे का रहस्य क्या होता है? यू हैव टू, यस मैम। whatever you're choosing, you have to attract the reader, तभी तेरी कहानी पढ़ जाएगी। नहीं तो परविंदर भी हंस रही है कि वो नहीं पढ़ेगी ये कहानी। तो एनीवेज, तो आपने सेटिंग बता दिया कि किसी गांव में एक किसान रहता था। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, यू डिस्क्राइब द सेटिंग। सेटिंग क्या है? अ विलेज where a farmer lives, right? So, and you have described the character. I have introduced story characters. अब तेरे कैरेक्टर में एक किसान की तो बात कही गई है, और उसमें और क्या क्या है चलो उसी को पूछते हैं। और कितने कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे इसमें? हेलो मनीष। हाँ, यस मैम। आई एम टीचिंग यू प्रैक्टिकली हाउ टू राइट अ नैरेटिव स्टाइल। हाँ यस मनीष, और कैरेक्टर्स के बारे में बात बताओ। और कितने कैरेक्टर्स तुम्हारी स्टोरी में? मैम एक मुर्गी है मैम, एक किसान है, उसकी वाइफ है, और मैम उसका एक बेटा है छोटा सा। अच्छा ठीक है, इस मैम यही है और गांव वाले हैं। तो कैरेक्टर्स सेटिंग बता दिया इसने हेडिंग बता दिया, इसने सेटिंग बता दिया, और इसने कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इस इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, राइट? इसको आप इंग्लिश में लिख के दिखाइएगा हमको। ओके मैम। ठीक है, आप फिर की कहानी लेके हम चल रहे हैं आज। ओके मैम। ऑल राइट, ये तो हो गया बिगिनिंग पार्ट। बिगिनिंग पार्ट में शीर्षक कहानी का, एंड सेटिंग एंड द कैरेक्टर्स। ठीक है, मिडिल पार्ट, I have used the 5 senses to create atmosphere. मतलब उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, उसने all the 5 senses, sight, मैम seeing। वो मैम सुबह उठ के मैम मुर्गी अंडे देती थी, तो मैम वो उसका अंडा ले देखता, तो मैम वो सोने का अंडा रहता, वो सोनार के पास जाता मैम, तो फिर वहां पे उसको बेचता मैम, उसको पैसे मिलते, बहुत ज्यादा पैसे मिलते। तो क्या आपने यूज करना है 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस क्या हुआ? उसने देखा, उसने सुना, उसने अंडे को छू करके देखा। 5 सेंसेस, टच, 5 सेंस जानते हो ना? साइट, यस मैम, स्मेल, नोज, टच, और फील आप में डाल दिया। You have used the 5 senses to create the atmosphere. And I have included action. ये एक्शन क्या था? राइजिंग एक्शन क्या था? राइजिंग एक्शन तो ये है ना कि he used to see that the eggs are of gold. और वो क्या करता था? वो जाके, वो एवरी डे का सीन था उसका, used to go and sell those eggs in the market. और हर एक एक अंडे का उसको पैसे मिल देते हैं कि नहीं? यही ना, यही कहानी है ना? और एक एक अंडे को वो पैसे लेकर के, और जैसे बूंद बूंद से गागर भरता है, तो वैसे ही वो
नहीं नहीं, बूंद बूंद से पैसे उसके भर रहे हैं बैंक में। तो इनकी पत्नी ने क्या देखा, वो तो फॉलिंग एक्शन हो गया। तो राइजिंग एक्शन क्या होता है, वो एक्शन क्या था, एक्शन था the farmer saw that the hen was laying golden eggs. So he used to go, what he thought, what he saw, what he felt. Then he went and sold those an egg every day, and this is how he was getting help from that golden egg. So I have included action. This was the action. I have introduced a problem or event. और फिर प्रॉब्लम सब कुछ सही चल रहा था, राइट, एवरीथिंग वाज फाइन। ये एक्टिविटी थी जो कि एवरीडे होती थी, तो इसमें नया क्या है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, वेयर इज द प्रॉब्लम, अब बताओ प्रॉब्लम और इवेंट बताइए, क्या हुआ फिर क्या हुआ। मैम उसकी वाइफ देखती है मैम, हर रोज ये लेके जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। उसकी वाइफ ने सोचा कि मुर्गी को मार देते हैं एक बार में, जो सारा अंडा निकल जाएगा एक बार में, एक सारा बार पैसा इकट्ठा कर लेंगे। एक बार ओके। उसके बाद मैम परेशानी शुरू। ओके, तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको लगने लगा कि थोड़े थोड़े पैसे आ रहे, क्यों ना एक ही बार सारे के सारे पैसे ले लें, बस बात खत्म। मैम वो लालची हो गया होगा शायद। हाँ, ये यस कहानी मैम, दैट्स राइट। परविंदर सबने स्कूल में पढ़ा ये कहानी, ठीक है, तुम भी Yes, पढ़ी होगी। ma'am. मैम ये स्टोरी आधा अधूरा बता रहा है। बता रहे तो तुम अपना पूरा लिखना। ठीक है मैम। So what was the problem? The problem was there was no problem. There was no problem with the farmer. Things were going fine. Things were going as he had planned. Every day he was going and selling that egg and coming back home with some money. But his wife had a problem. And she felt that this little by little, by the time money will come, we will become old and we will die. So what is the use? So the problem came here. And then what was the event that happened? The event was Her wife think that why not all the golden eggs Okay. are collected in one time. अच्छा, ये problem और event मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। प्रॉब्लम एंड इवेंट क्रिएट हो गया मिडिल में, एंड एंडिंग में क्या क्या होता है, you have tried to resolve the problem. So what was the problem that the wife wanted to resolve? उसने क्या किया, उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि क्यों ना इसको मार दिया जाए और सारे के सारे पैसे आ जाएंगे और we'll get all the money. So this was the solution of the problem which the farmer's wife had, because she had the problem, so she resolved the problem. She resolved it. And I have used powerful verbs and adjectives. और फिर उसने किस तरह से इवेंट को वो अंजाम दिया, और उस तरह से यूज पावरफुल वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब। And मैम you are not audible. I do not know, I'm speaking but मैम यू आर ऑडिबल। Ma'am, you are Ma'am, audible, आपका ma'am. okay. And now the ending. So the problem and resolving the problem, the event was already created in the middle, and then the problem was solved. And with powerful use of words, and then one thing was there, dialogues. So in every story there has got to be dialogues. नैरेटिव स्टाइल में क्या होता है, एक प्लॉट होता है, प्लान होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड द एंडिंग होता है. And after you finish the writing, maybe the same story, if you want to rewrite it, do it. If you want to change it, you can change it. Let it be your creativity. Let it be the new style. Give it a different name. अच्छा, कोई और नाम कोई बता सकता है क्या? The hen that lay the golden eggs. इसका और कोई नाम suggest कर सकता है? Can anybody suggest a different name for this? Let me see how creative you guys are. लालच बुरी बला है। सोने की अंडे लालच देने वाली बुरी। मुर्गी। लालच बुरी बला है। और you can come up लालची with a किसान। लालची किसान। किसान कहाँ लालची था?
मैम ये स्टोरी गलत बताया, उसकी वाइफ रहती ही नहीं है उस स्टोरी में। अच्छा, जो उसने सुना होगा मैम वो तो बताया ना। मैम वो तो मैंने मैम ऐसे ही लालच बुरी बताया, बट बला मैम उसका एक ठीक है। मैम वो दुकानदार जिसके पास बेचता था ना, तो मैम वो कहता था उसको कि तुम एक बार में ही क्यों नहीं ले आती सारा अंडा, मैं तुझे एक बार में ही पे कर दूंगा इतना सारा। मैम वो किस दुकानदार कहता है मैम, मैंने अच्छा, इसमें दुकानदार। ऐड कर दिया। तो ओके, सॉरी। तो आप ओके ओके अब ओके ठीक है फर्स्ट अमरीता? टाइम, ओके 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 ओके। तो फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट टाइम when the farmer sees the hen which is laying golden egg, जब पहली बार देखा तो उसने क्या किया? Can you create a dialogue between you and the shopkeeper? Create a dialogue. मैम डायलॉग और लाइंस वगैरह? हाँ तो बताओ, वही तो बोल रहे हैं। Narrative writing should always have dialogues, no? Anybody? Supposing you are the Kisan, Manish Kumar, and यस मैम। और शुभम शॉपकीपर। चलो, role play the Kisan, the farmer, and the shop owner. नमस्कार शुभम जी। हम हमारे पास एक ये Come पता नहीं on, why कौन सा can't चीज है you ये। English में बोलो भैया? This is business English class, so it's speaking Hindi. ओके मैम। हेलो शुभम, आई हैव वन like a golden egg, and you see and define that what is this? Oh, it's really a golden egg. And how did you got this? I'm Are from you sure that it is a golden egg? I'm shocked. I'm totally shocked there. Yeah, I'm sure because I am in this profession from several years. So हाँ तो ठीक है, ये एक तरह का डायलॉग हुआ। yes, ma'am. Ma'am, anything what I see, what we say that ma'am it is a dialogue. हाँ, You यस, can say that. हाँ, ये इसी को डायलॉग कहते हैं। तुम जो Yes, क्रिएट ma'am. कर रहे हो ना, दिस इज डायलॉग। और अगर तुम खुद से बात कर रहे हो, सपोजिंग मनीष कुमार, यू आर अलोन इन द हाउस एंड नोबडी इज देयर, तो कभी कभी इंसान ड्रामा में देखे होगे कि मोनोलॉग होता है, इसमें कोई तुम्हारे साथ कोई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम अपने आप से बात कर रहे हो और ऑडियंस तुम्हें देख रही है कि तुम स्टेज पे टहल रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। दिस इज कॉल्ड अ मोनोलॉग। ठीक है, डायलॉग मतलब किसी और से बात कर रहे हो एंड मोनोलॉग मीन्स तुम खुद से बात कर रहे हो। So this is also Ma'am, talking dialogue to means oneself. conversation. हाँ, self conversation. So I have included dialogue. आपने include कर लिया dialogue. So now this story is complete now. ठीक है, story is complete now. So you will do the editing. अब editing में क्या क्या देखना होता है? What are the things you will see in editing? उसको revise करना। I have checked my spelling and punctuation. और फिर जब पूरी कहानी जब लिख लिए होते हैं आप, तो चेक करते हैं स्पेलिंग्स में, कहीं स्पेलिंग्स तो रॉन्ग नहीं है या पंक्चुएशन तो मिसिंग नहीं है। So you are checking. I have used thesaurus to find synonyms, और आपने web यूज किया है। You have searched the web for some words, synonyms, dictionary, thesaurus, सब आपने यूज किया है ताकि आपकी नरेटिव राइटिंग बेटर, अच्छा रहे। And I have checked my story makes sense. और आपको पता है कि आपका स्टोरी सेंस, it is making sense. बेतुकी स्टोरी नहीं है। Ma'am, you इस will स्टोरी get में ma'am, प्लान है, इस स्टोरी में प्लॉट है, इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं, इस स्टोरी में राइजिंग एक्शन है, इस स्टोरी में फॉलिंग एक्शन है, इस स्टोरी में क्लाइमैक्स है। तो इट हैज एवरीथिंग। व्हेन अ स्टोरी हैज एवरीथिंग, इट मेक्स सेंस। So narrative writing tells a story, real or fictional, मतलब वो कहानी सही भी हो सकती है और वो कहानी फिक्शनल भी हो सकती है।
मतलब काल्पनिक, not real, unreal. Whether or not the event described really happened, अगर सही में वाकई happened हुआ तभी स्टोरी हुआ, आपका imagination है, even then it is a story. So this type of writing is all about presenting a story in a way that readers will enjoy and understand. So the sole purpose of storytelling or story writing, the objective should be that the readers should read to enjoy, of course, and understand. The events don't have to happen in chronological order. कोई जरूरी नहीं है कि आपके इवेंट्स chronological order में हो, जैसे कि एक्सपोजिटरी स्टाइल में है. कोई जरूरी नहीं है कि नरेटिव स्टाइल chronological order यूज किया जाए, but they must मैम आपकी आवाज capture. नहीं आ रही है हमको. I don't know, I'm speaking but so, but you आ should रही है. capture the reader's attention. ठीक है. So this is the layout of a descriptive writing, sorry, narrative writing. What are the types of narrative writing? We'll discuss the types and wrap up to today. So narrative writings can take many forms. It can be your own story, आपकी अपनी कहानी, such as a memoir or a personal essay, your experience, your memories of the past. It can be just about anything. It can also be the story of a historical event or a work of fiction, such as a short story or novel. You can also narrate a story written by somebody else. So the types include anecdotes, novellas, oral history, poems, and short stories. Now, what is the meaning of anecdote? Yeah. Some personal life happened story में ये भी तो. हाँ, personal life. आपका experience, personal experience. How we feel, how we manage that. हाँ, but it has to be a story, not expository. इसका story होना चाहिए, the beginning, middle, and end होना चाहिए. So anecdotes, the first type of narrative style is the anecdotes. ये क्या होता है? A short, interesting story about a real person or event. यहाँ पर है interesting story about a real person. कोई घटना जो कि actually happened, real है, which is called anecdotes. It should be short, it should be interesting about any person or an event. Novellas. अब novellas क्या होता है? Novellas means a short novel or a long short story. छोटी सी नॉवल या बहुत लंबी सी कोई कहानी, novellas कहा जाता है उसको. Novels fall under this category. Oral history. What is oral history? Anybody? What is oral history? Something which you have heard from somebody else. Something which you have, the story which you have gathered from interviews, YouTube. आपने सुन के कुछ acquire किया है जो. Orally, somebody must have told you about the story about the freedom struggle, story about the past. Excuse me, ma'am. Yeah. मैम आरग्य का लीव हो गया है इस नेटवर्क इशू की वजह से. मैम वो वेटिंग रूम में वेट कर रहा है. और आप कैमरा ऑफ करके बात कैसे कर रहे हैं? हाउ डेयर यू टॉक टू मी विद योर कैमराज ऑफ? कम से कम उतनी तो होनी चाहिए आपको डिसिप्लिन कि मैं बात कर रही हूँ तो मेरा कैमरा ऑन होना चाहिए. सॉरी मैम. या ऑरल हिस्ट्री का मतलब होता है व्हाट यू लिसन फ्रॉम अदर्स. वो कहानियां जो कि आप किसी और से सुनते हैं. इट कैन बी अबाउट हिस्ट्री, इट कैन बी अबाउट 30 years फ्रॉम नाउ क्या हुआ था, 50 years क्या हुआ था. You gather some information
by interviewing people. जैसे सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू होती है, बताइए आप बचपन कहाँ बीता था, स्कूल कौन से जाते, यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल. This is called oral history. Poems. Every poem, each poem will tell you a complete story. In the next class, I will ask all of you to come up with a poem or a story to relate, to tell me if that you have understood the narrative style of writing. And any short stories. Short stories can be an anecdote, a real story. It can be a real interesting story or a fake story. Whatever you have compiled about Rahul Bajaj or Narayan Murthy or Subhash Chandra, वो सब क्या है? सब anecdotes है. Short, interesting story about real persons or events. They are success stories. They are also narratives. Isn't it? मैम इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा जरूर से मैम ग्रुप पे. तुम तो पहले पीडीएफ ही की डिमांड करने लग जाते हो. ये कंप्लीट हो जाएगा लेसन मैं भेज दूंगी. ओके मैम ठीक है भैया से भेज दीजिए. मेरा भी आज को पीडीएफ चाहिए. सबको भेज ही देते हैं. व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू तो आपके पास चला ही जाता है. So examples आप खुद देंगे. Any short story, any poem, whatever you understand. It can be a real story, it can be a fake story, it can be your story, मूवी का हो your सकता है. parents story. क्या मूवी का भी हो सकता है. हाँ मैम किसी मैं भी movie यही का कहना चाहता था. क्या मैं भी यही कहना चाहता था जो कही. ठीक है. कोई जैसे कोई पोइट्री आप जानते हो अपने स्कूल डेज से, तो वो जैसे उसने बताया वो गोल्डन हैन वाली कहानी, तो वही बचपन का सीखा हुआ है. यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू राइटिंग स्टाइल. इस कैटेगरी में नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्रीज, रियल, फेक, whatever, everything will come under this category, which also is supposed to be creative writing. You create, you imagine, you create, you recreate something which already is done. Like the golden hen, the story already is created. What you can do, you can turn it with a twist. You can make the ending more interesting. You can include a lot of dialogues. It can be, this is the moment you start writing, it becomes your piece of work. So how well you can do it, how creative you can be. So take your pick, take your chance. And in the next class, no, not in the next class, but then be prepared. I can ask any one of you to give me an example of expository style. You already have given example, but give me an example of narrative style of writing. And then we'll turn to persuasive style, which is the next, and then the descriptive, the last. Any questions you have? नो मैम. मैम ये लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या होता है? लंबी सी कहानी या छोटा सा कोई नॉवल. 10 पेज की कहानी हो सकती है ना, 10 पेज की शॉर्ट स्टोरी की लंबी कहानी हो सकती है, और 10 पेज का एक नॉवल भी हो सकता है. अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी एंड अ शॉर्ट नॉवल. ओके मैम. Anybody else, anything to ask? Okay, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं. What is the difference between expository and narrative style? Hello? The person who will answer this will get 2 marks in today's class participation. If nobody is answering, all 0. What is the difference between expository and narrative style? Expository means to explain a topic, and narrative means to tell a story. Okay.
So you're just informing or explaining. But in narrative, you're telling the entire story Yes, ma'am. from beginning till the end. Yes, good Shubham. Now that you Ma'am, excuse, Ma'am, ma'am, narrative narrative. notification tells a story or conveys an experience. Ma'am, whereas the expository notification explains, describes, or informs in a clear way. Yeah. Accessible. Yes, fashion. very good, very good. So the students see, if you Ma'am, interact, if you ask questions, if you answer, you will learn better. Hi, yes. Ma'am, Ravi can Raj, I, कुछ पूछना है? ma'am, can I give a chance, ma'am? I give the answer about what are the difference between narrative and expository style. हाँ ठीक है, बोलो. Ma'am, narrative style means notification tell a story or convey an experience, whereas expository means notification explain, describe, or informs in a very systematic and clear manner and accessible fashion. रवि राज, तुमको पढ़ने के लिए नहीं कहा गया था. I told you to कुछ भी मतलब पढ़ने ही लग जाते हो तुम लोग. ठीक है, चलो पढ़ के भी कुछ समझ रहे हो तो ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है. फाइन, बट ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स. कुछ भी आप कर रहे हो ना. In expository, Yeah. in expository, I'm explaining things in a clear and logical steps. Yes, clear, logical, concise, and precise. But narrative. In narrative, it is telling a story as a function for enjoyment or an. Yeah, a narrative style of It is- writing is for extensive reading. You read for pleasure. हमें कोई भी कहानी को आप एंटरटेन होने के लिए पढ़ते हैं ना. यू रीड फॉर प्लेजर. एक्सटेंसिव वो आप पढ़ेंगे जब आप when you will start learning what are the reading skills. What in second semester there is a chapter reading skills, intensive reading, extensive reading, skimming, and scanning. That is in your course, in your syllabus in the second semester. So that's it for today. Let us wrap it up, and please go through your module, read the chapter writing skills in your, those who have got the books, read it.